यो 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 वेलकम बैक। हम आज बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट यू बीन लुकिंग फॉर दिस एंटायर टाइम। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लर्टिंग गाइस, एंड द रीजन व्हाई आई वांटेड टू मेक content on flirting, and over the course of this month we'll make content on love, on romance, on relationships, on all these different things, is because I'm sick of the many philosophies that come about that ask you to abscond on sex, that ask you to dump sex and keep it in a corner and not look at it. And I think what that leads to is this ultimate form of repression, जहां पे तुम्हारे हर एक्शन में तुम्हारी सेक्स की भूख क्लियरली नजर आती है। एंड सो क्या फायदा है उसको अपने आप से डिसइंटीग्रेट करने का? इट इज सपोज टू बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ हु यू आर। तो क्या फायदा है उसको साइड में निकाल के रखने का, कोने में सड़ने देने का? And exactly for that purpose, we're making great content on flirting, we're making great content on love and romance and everything about relationships during the course of this month. So, if you like this and if you want to see more of this, तुम्हें क्या करना है? टिंग टिंग टिंग, समझ रहे हो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटे वाला बटन दबाना है और तैयार होके आते रहना है। हम लोग और कंटेंट बनाते रहेंगे। See you on the other side. These are the 12 rules for flirting. इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। तो ऐसा नहीं है रूल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, रूल्स तो एग्जिस्ट करते हैं, बट क्लोज सिस्टम्स में और ओपन सिस्टम्स में उन रूल्स में फर्क क्या होता है? लोग ओपन सिस्टम्स, जो कि ह्यूमन बिहेवियर है, जहां पे बहुत सारे आउटसाइड फैक्टर्स हैं दैट कैन इन्फ्लुएंस यू, उसमें क्लोज सिस्टम रूल्स ऑफर करते हैं। और वो समझते नहीं है कि भाई कॉन्टेक्स्ट भी तो कुछ होता है। तुम अगर मेरे 4 रूल्स भी देखोगे, वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट एडवाइस नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट एडवाइस है। तुम्हें खुद का दिमाग लगा के कॉन्टेक्स्ट डालना है। तुम आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन देख लो, तुम मेरा कोई भी वो देख लो। जब मैं क्लोज सिस्टम रूल्स देने लगता हूं, जहां पे डेफिनेटली ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, मैं बोलता हूं ऐसे मैं करता हूं, तुम्हें इसको अपने तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। और मित्रगण, क्या हाल है? सब बढ़िया? देखो बेटा, हमें पता है वैलेंटाइंस डे आ रहा है, और मेरे को ये पता है कि जितने इंजीनियर बिरादरी के, सीए बिरादरी के, जितने मेहनती आईएएस बिरादरी के लोग होते हैं, इस समय के आसपास अपने आप को बड़ा अकेला पाते हैं, और अकेले से भी ज़्यादा और इंटरेस्टिंगली अपने आप को इनकेपेबल नहीं बोलूंगा मैं, ऑलमोस्ट अननोइंग पाते हैं ऑफ knowing how to flirt. Like, you just do not have an idea as to how to go about it. And usually people who do not have an idea as to how to go about flirting will make an attempt and find themselves getting a negative feedback and think कि नहीं नहीं ये तरीका गलत है, ये creepy है, रिस्पॉन्स ऐसा आता है, ढंग से करते नहीं है, और फिर उस लूप में फंस जाते हैं जहाँ पे वो कभी कर नहीं पाते। फिर भाई कंधा बनना, फ्रेंड जोन होना, अकेला रहना, सेल्फ मिजरी में जीना कि देखो मैं लायक नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, ये साइकिल चल जाती है। और इसीलिए मैं पर्सनली सोचता हूँ सेक्स, फ्लर्टिंग, रोमांस, ये सारी चीज़ें लाइफ का इतना इंटेग्रल पार्ट है, इनको डिवोर्स नहीं किया जा सकता। तो इन द वेन ऑफ जॉर्डन बी पीटरसन, लेट्स डू 12 रूल्स फॉर फ्लर्टिंग। ओके, before we get on down to understanding flirting, there's a few things I need to mention just to set the context for the video. Flirting is a thing, again, like I've said, conversation overall, any kind of interaction, social communication overall is an instinctive skill. आपको उसको अपना मसल मेमोरी बनाना पड़ेगा। अगर आप सोच सोच के करोगे, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो आप ये सारे रूल समझ लो, बट इवेंचुअली आपको इनको प्रैक्टिस कर करके, धीमे धीमे कोशिश कर करके इनको अपना मसल मेमोरी बनाना पड़ेगा। कैसे? ये हम आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन में दबा के मेंशन करते हैं। द जनरल रूल्स, हाउ डू यू प्रैक्टिस, ला ला ला, everything we mention in the art of conversation. If you want more than what just this video provides, you can always check that out. There is a discount code in the description. My love to you, right? The second thing is, because this is instinctive, because ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप मिमिक कर सकते हो, चाहे आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, it is best always to use an example. And the example we will use in this case is Russell Brand. Russell Brand is one of my favorite people on the planet. He's entertaining, he's smart, he's driven, he's funny, he's all these different things, and he's beautiful to look at on a screen. Like watching Russell Brand, heartwarming. I love it. But there is a few things that I have to mention before we start checking that out. One of the things is, जो रसल ब्रांड बाकायदा करता है ना, या करता आया है, जो उसके इंटरव्यूज में, उसकी फुटेजेस में एक्सेसिबल चीज़ें हैं, वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है दोस्त। आपके कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट लाइकली वो एप्लीकेबल नहीं है। देयर इज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स दैट चेंज द जियोग्राफी ऑफ योर फ्लर्टिंग लैंडस्केप। ठीक है? द फर्स्ट थिंग इज आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट।
Russell Brand is from the UK. He spends most of his time in America. There's a few interviews from Australia and everywhere else in the world as well. The Western world, the white world, the world where sexuality has been liberated to a point where you can speak of sex without it appearing as a social taboo. आप इंडिया के वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में से कहीं भी हो सकते हैं. आप एक बहुत मेट्रोपॉलिटन मुंबई दिल्ली टाइप की जगह में हो सकते हैं जहाँ पे ये चीज़ें फिर भी काफ़ी लागू हैं, या आप जमशेदपुर और इंदौर टाइप के थोड़े छोटे शहरों में हो सकते हैं जहाँ पे ये चीज़ें और टैबू बनती चली जाती हैं. द प्रिंसिपल्स रिमेन डायरेक्टली एप्लीकेबल, बट आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आपको अपना कल्चरल सॉइल समझना बहुत ज़रूरी है. द वे रसल ब्रांड सेक्शुअलाइजेस द कॉन्वर्सेशन यू probably cannot do. In India, my experience is that if you're trying to flirt, you have to be subtle with whatever sexual hints or romantic hints you throw. Too large and too big becomes a problem. You have to understand, particularly because this is a video that's going to be talking about how men flirt with women. Women in our country are very afraid of making wrong sexual choices. एक लेवल पे societal issue है, दूसरे लेवल पे personal issue है, तीसरे लेवल पे security issue है. And therefore, sexualizing immediately and too strong can be a problem. So you have to sort of learn how to subtly do it. The good news is that that sort of goes along with your attitude. You most likely are also shy of sexualizing a conversation. So you can take baby steps in that direction. The second thing with Russell Brand is personal courage. And what I mean by that is Russell Brand वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी एक महा अनोमली है दोस्त. वो एक बहुत ही मतलब कई स्टैंडर्ड डिविएशन दूर एक बिल्कुल ही हूर का परा है अपनी फ्लर्टिंग टेक्निक्स के साथ, राइट? और वो इसलिए है क्योंकि उस बंदे में ज़बरदस्त लेवल ऑफ कमिटमेंट टू हिज रियलिटी, विच इज़ अ पॉइंट वील डिस्कस लेटर ऑन, और पर्सनल करेज है, उसमें हिम्मत है. सब लोगों में वो हिम्मत नहीं होती. मेरे में भी वो हिम्मत नहीं है कि मैं उस लेवल पे छक्का मार सकूं एक कॉन्वर्सेशन में. आपको उस लेवल की आउट देयर बंदर जैसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू अपीयर एक्सेसिव. You can be very calm, subtle, receptive, and still flirt. However, the principles we'll see in action from Russell Brand apply 1:1 no matter where you are, no matter what you're doing. These are the fucking secrets of flirting, guys. The other thing I want you to understand before we go into this video is that the list of rules that we're going to talk about will affect you or is intended to affect you on two levels. The first level is the mindset level. And what that means is आपका mindset क्या होना चाहिए when you're going about trying to meet people in a romantic sexual setting. And the second thing is techniques, which is आप individually कैसे वो techniques apply कर सकते हो जिससे आपको returns आए. So we'll talk about both these things. This is it. So without further beautiful ado, let us begin our discussion. Rule number 1, do not be afraid to show yourself. I'll show you a few clips and you'll notice how Russell Brand in very public settings, interviews पे where there is more than one host involved, a set of on-looking people are around him and then the world is watching him, is not even remotely afraid of showing himself. And this is a problem most men do when they're trying to, well, court an attractive female in a group, in a public setting, in a college, school, outside your workplace, in a bar, in a club, is that वो इतने afraid हैं कि वो अपने आप को, they don't even appear, they don't even let themselves be the center of attention in any way at all. And if you're not going to be the center of attention in at least one or two instances, how are you going to get noticed? उसके दिमाग से सोचो ना, वो तो वहाँ पे अपना जीवन जीने आई है. उसको कैसे पता लगेगा उस भीड़ को देख के कि तुम देखने लायक हो? आओ, let's see how Russell Brand does that. And then you have to sort of get this level in your head कि जब आप, when you're trying to court somebody, you have to be visible. Let's see it. Come. Deal. I know. I'm told this. I'm not very pop cultured. I'm sorry. Comedian, movie star, author, and host of the show Brand X, Russell Brand. This summer he's embarking on his first ever worldwide comedy tour, The Messiah Complex. Katty Kay and Brian Shackman are here as well, and he already told Brian that he might want to disrobe. I'm just एक बार ये चीज़ ध्यान से देखो कि जब वो उसको डिस्क्राइब कर रही है, विच इज़ वेरी कॉमन. अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको सेंटर में डाला जाएगा अटेंशन के. लुक एट हाउ कंफर्टेबल ही इज. झूल रहा है अपनी चेयर में, यहाँ वहाँ देख रहा है, कोई चेंज इन एक्सप्रेशन नहीं, एब्सोल्युटली कंफर्टेबल. I just thought maybe I could loosen up a little, show a little more chest hair, and he said maybe I should do a little more. I only think Russell can do that. You look fantastic. Yeah. That is a very kind compliment. You also look beautiful. Brian, you are free to wear whatever you want. This is one of your freedoms that is afforded to you. I appreciate that. Uh-oh. Silver boots. The boots are I want to see them. Come on. Put them on the table. Kinky boots time. Wow. There are some boots. Those are nice. नोटिस कि पहले
उसकी अपीयरेंस के बारे में बात होती है, यू लुक वेरी अट्रैक्टिव, ये वो, ही इज अगेन बीइंग थ्रोन इन द सेंटर ऑफ अटेंशन, हैंडल्स इट वेरी कामली, इज लाइक थैंक यू, ऑल्सो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ऑल्सो बाय द वे डूड वेयर वट एवर यू वांट। ही इज सो कंफर्टेबल कि वो उससे अनहिंज नहीं हो रहा, ओ माई गॉड सब मेरे को देख लेंगे, ये वाला सेंटिमेंट नहीं आ रहा है। फिर उससे जब वो उसके जूतों के बारे में भी बात करते हैं, विदाउट थिंकिंग एक स्टूडियो में वो अपना पैर उठाता है, टेबल पर डालता है, कहता है देखो जूते। ही इज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन। Put your feet up, relax. I wouldn't do that. I don't want to disrespect your program. Okay, no, but you did ask to see. No, I the did. boots. And then he's sensible enough to be like, मैं बहुत देर ये नहीं करूंगा, देख लो, comfortable हूँ मैं, तुम you cannot throw shit at me. He's not doing this consciously, by the way, but this is what gets communicated. I'm comfortable with this, and so I'll respect your And I choice. like You're a fellow English woman, so And we I felt obliged. we talked about kinky boots recently. So Yes, it's a it was fantastic show. You have to go. Okay, Russell. Ooh, Sorry about that. I That's didn't all realise right. it was You just just like disrespected the table. table giant Jenga. It's like your desk is a puzzle. It is. I'm sorry about that. What is Can the I help solution? you? I think we could try to plug back in. So, There you go, love. Be careful because देख रहे हो कि आदमी जनरली अटेंशन में आना क्यों नहीं चाहता है, ताकि वो कोई गलती ना कर दे और कोई एम्बैरेसमेंट ना पकड़ ले। He makes a mistake live on TV in front of a whole set with 3 hosts on there. 3 of these hosts, all 3 of them eventually turn out to make slightly weird remarks we'll see in the course of the video. You can always check these videos out in the description as well, but notice how when he even makes a mistake, he just plays along. He's like, oh, your table looks like a Jenga. Oh, what is the solution? He smiles. He's so comfortable making a mistake, being the center of the attention. And because he is so comfortable doing that, and that problem needs to be solved, the host gets up and tries to solve that problem. This is something most people do not understand about interactions, is that there is no fixed rules. It is the way people behave. दूसरे लोग उसके लिए compensate करते हैं. तभी तो you have these toxic relationships where there is quote unquote assholes and then the other person is this toxic giver जिसको सारा time देने की ज़रूरत है to feel validated, so on and so forth. Right? People behave in the way the other person moves. आप उसके साथ adapt करते हो. And he's just so comfortable making a mistake. Somebody else is trying to fix it for him. That is what I mean by the idea that do not be afraid to be the center of attention. Well, brand can do it in an amplified way. वो जूते टेबल पे रख सकता है, टेबल मूव कर सकता है, ला 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 ला. All you've got to do is when you're in social settings, say your piece, be yourself, say the things, crack the jokes, do the shit that you're supposed to do. That's it. If you are called upon to be the center of attention, do not hide. If you're going to hide, nobody's going to notice. And if you're going to get unnoticed, dude, how are you going to get where you want to get? How are you going to get the attention of the other person? Now, very often people confuse this getting attention with impression, क्योंकि सबने इतनी सलमान खान पिक्चरें देख ली हैं कि वो आयशा टाकिया को सिर्फ उसकी अटेंशन नहीं ग्रैब करता है, वो फिर जाके गुंडों को 6 बार पीटता है, 18 बार, उसके बाद उसको स्टॉक करता है। ये करने की जरूरत नहीं है ब्रो। नेचुरल एनवायरनमेंट में करो ना जहाँ पे ये होता है। स्टॉकिंग स्टूकिंग गुंडाई पे मत उतरो। सिंपल सी बात है, यू नीड टू गेट हर अटेंशन, यू डोंट नीड टू हैव इट फॉर एवर, you just need to get her attention. She needs to know that you exist. It's as simple as that. That's rule 1. Rule number 2 is taking the lead. And you'll find rule number 1 and 2 are kind of related. But taking the lead is slightly different than just having attention. If attention is thrown at you, you handle it. Taking the lead is kind of an assertion activity. तुम्हें on some level एक group में to stand out and appear valuable, you have to take a lead and then others have to kind of follow it. And how do you do that? Longer discussion. We will also address some parts of it within this discussion. Also massively available on Art of Conversation. I don't want to plug it too often. You get the idea. But notice how within the context of Russell Brand की social interaction वो किस तरीके से lead लेता है और चीज़ें यहाँ से वहाँ move करता है, कि वो कितना free spirited है और जो वो चाहता है वो करता है और लोग उसको उस sense में follow करते हैं. Now, again, Russell does this whole different level. You don't have to do it at that level at all. You could just be as simple as तुम कॉलेज में hang out कर रहे हो, the girl that you find cute is there. Just tell the guys, hey, चलो चाय पीने चलते हैं. Hey, चलो कुछ lunch करके आते हैं. It's as simple as that, taking the lead, right? Suppose you're about to watch a movie, be like, bro, ये वाली movie देखते हैं, ये वाली movie देखने का मेरा मन है. आपको एक सिंपल लेवल पे जहाँ पे आप हो, जिस स्टैग्नेंट पोजीशन में आप हो, वहाँ से उसको उठा के कहीं और ले जाना है अपनी लीड से. That's as simple as that. So the first step is be noticed. The second step is take people somewhere. Make people do something. Be alive and attentive in a way where people are alive and attentive to you. That's as simple as that. इसे establishing personality कहते हैं. यहाँ पे अपनी personality की strength establish कर रहे हो. आओ, let's watch. You know, it's funny though because I travel a lot. And all these people are at work, are they? Yeah. Look, notice. वो उससे कुछ बोलना शुरू करता है, जो होस्ट है वो उससे कुछ बोलना शुरू करता है, रसल ध्यान भी नहीं देता, रसल मुड़ जाता है, मुड़ के देखता है और लोग क्या कर रहे हैं, और लोग बोलता है ये लोग सब काम कर रहे हैं ना, इसने कॉन्वर्सेशन उठाई लीड करके कहीं और ले जा चुका है.
They're Yeah. working. They're just at work. Well, no. Work more quietly. They're Facebooking, actually. What are they doing? Facebooking. They're Facebooking. Yeah. Shopping. I bet they can't look at pornography. I bet it's blocked. Look how the conversation suddenly gone somewhere entirely else. Now he's talking about bloody pornography and Facebooking about the employees who work in an office he doesn't even belong in. That is a level of lead he has on people because और भी लोग उसके साथ play along कर रहे हैं. Right? How he does that, we'll come back to it. But you get the point. Watch. Websites, huh? Oh, I don't know. The conversation's completely moved away from the last guy's question. Now we are talking about something entirely different. I don't know. They look pretty focused. But they're allowed to look at, if they wanted to, they can tweet, they can Facebook. Yeah? They have to. That's part of They're their probably job. tweeting right now. They're tweeting themselves senseless back there. Yeah. Lovely. That's to create the atmosphere of we're a hotbed of news. It's a working news. Yeah. They're actually actors. They're all fully qualified. See how much they're playing with this joke just because he led them somewhere and he added fun to it. Look at how much they're playing with him. That communicates strength of personality. That's what that is about. Now, in this segment, you'll see कि रसल को एक लेवल पे जो होस्ट्स हैं इस इंटरव्यू के दे ऑफर हिम द लीड देर लाइक हे सो do you want to throw this segment out for us? And look at how well he assumes that lead. Just watch how well he assumes that lead. That you might be able to throw to our international news segment. Would you be okay to do Yes, that? I'm precisely the right person to throw to an international news segment. Thank you, Carrie. It's time to see what's making the news now around the globe with a quick peek at an international news package. Take it away. See, character देखो उसने एकदम ही understood कि देखो इस ग्रुप में मेरे को लीड लेने को बुलाया गया. He takes the lead and then take it away. That is all the residual point is यहाँ पे. As far as taking the lead is concerned, what that is about is moving the conversation from one place to another. Moving the group of people, you individually, from one place to another. It is just going forward in time and you taking the lead for it. And iska purpose is to communicate strength of personality. For men particularly, it communicates कि आप decisive हो, आप committed हो, आपसे जो बोला जा रहा है, जो आपकी position है, चाहे वो explicit position है in the second example या unsaid position है in the first example कि आपका interview हो रहा है, आप उसे assume कर सकते हो. There is no problem. There is a subconscious understanding that if you are a man, also a woman, but if you are a man, आपको in places leadership assume करनी ही पड़ेगी. एक आदमी सारा वक्त लीडर नहीं होता. अगर वो काम पे लीडर है तो हो सकता है वो घर पे आके लीडर ना रहता हो, अपने बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हो. एक आदमी जो घर पे लीडर है हो सकता है काम पे जाता हो, अपनी बॉस की बात सुनता हो. आप सारा टाइम एक लीडर नहीं होते. आपसे इंस्टेंसेस में उम्मीद किया जाता है. एंड इन दोज मोमेंट्स एंड इन द मोमेंट्स वेयर देयर इज नो लीडर, you becoming the leader, you taking the conversation, the interaction forward is seen as strength of personality. Those are the first two rules. Now let's look at rule number 3. Rule number 3 is about setting up personality. In fact, rule number 3 and rule number 4 are about setting up personality. And there are two broad components to setting up personality, right? As far as flirting is concerned, the first thing you need to communicate is your personality is romantic or sexual. See, the point is कि आपने लोगों को प्री प्रोग्राम कर दिया है एक्सपेक्ट करने के लिए इवेंचुअली आप क्या करने वाले हो, आप क्या शेयर करने वाले हो, प्यार शेयर करने वाले हो, सेक्स शेयर करने वाले हो, वट एवर यूर गोइंग टू शेयर. आपने प्री प्रोग्राम कर दिया है. क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने देखा लाइक आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू, अगर इनफैक्ट इफ यू रिलेट टू दिस पुट इट इन द कॉमेंट्स. यू मीट अ गर्ल इन कॉलेज और स्कूल, आप बहुत टाइम या कहीं और पे आप बहुत टाइम उससे बात करते हो, टेक्सटिंग होती रहती है रात रात भर, दिन भर बहुत बात हो रही है, आप मुस्कुरा रहे हो, आप सोच रहे हो वो मुस्कुरा रही है. इवेंचुअली क्या होता है, आप एक दिन हिम्मत जुटा के वैलेंटाइंस डे पे उसको बोलते हो, सुन मैं तेरे को प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, या सो एंड सो. वो बोलती है क्या, ये कहाँ से आ रहा है रोहित, ये तुमने कैसे बोल दिया रोहित, ये कौन सी बात हुई रोहित. सडनली वो उस जोन में चली जाती है. और इट इज़ बिकॉज from everything you've communicated about your personality up until sex और romance कहीं दिखा ही नहीं है दोस्त. तुम सिर्फ कंधा बन के उसकी मदद कर रहे हो, और मदद तो दोस्त करते हैं ब्रो. हाँ, बॉयफ्रेंड और हस्बैंड और पार्टनर्स भी मदद करते हैं, गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स मदद भी करते हैं, बट उनका प्राइमरी फंक्शन मदद करना नहीं होता. एक प्राइमरी आइडेंटिफायर ऑफ अ दोस्त इज मदद करना. एक प्राइमरी आइडेंटिफायर ऑफ समबडी रोमांटिक सेक्सुअल इज मोर देन दैट. There is playfulness involved, there is humor involved, there is comfort involved, there's all these other things involved. And unless you mention the sexual and romantic parts of you, unless you communicate the sexual and romantic parts of you, nobody is ever going to know. Then you blame the girl, then you're like, हाँ मेरा इस्तेमाल करके उसने ये वो तूने बताया ही नहीं भाई उसे कभी. You never let her know. How do you expect that to be the case? Of course, there is
there is malevolent women and there is stupid men and there is all varieties of people. There's no doubt. But this is the most common reason why people have a misunderstanding. Between a blossoming friendship, the guy suddenly is like, I like you, and the girl's like, I never saw that. And the guy's like, you are a bad person for never seeing it. And that's the end of it. So, rule number 3 is about setting up your personality in a romantic and sexual way. And we'll see that with Russell. Again, what you have to remember is Russell does that on an extremely sexual level, and he can do that because of his cultural context and personal courage. In India, you've got to tone it down. And in India, this is my tip. You know, the way I set it up at this age in my life is I use very often the metaphor of arranged marriages. कि सपोज मैं किसी से बात कर रहा हूँ और कहीं बात जा रही है, अरे मम्मी को बता दूंगा, तेरी मम्मी से बात कर लेंगी यार. अब मैंने ऑलरेडी एक कॉन्टेक्स्ट प्रीसेट कर दिया ना अपनी पर्सनालिटी में कि ये जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन का एक पर्पस है, और वो पर्पस सिर्फ हाथ पकड़ के झूला झूलना नहीं है. वी आर गोइंग समवेयर विद दिस, राइट? और इंडियंस के लिए ये इतना एक्सेसिबल आइडिया है ना अरेंज मैरिज वाला यूज करना, बिकॉज हम उसके अराउंड सारे जोक समझते हैं. वी अंडरस्टैंड डीप लाइक मेटाफर्स अराउंड दैट. सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली ईजी इन अ रोमांटिक सेक्शुअल कॉन्टेक्स्ट to sort of communicate your vibe without doing too much using this metaphor. कुछ cases में जहाँ आपको लगता है इतनी liberty आपके पास है for whatever reason, you can go in a lot more sexual or a lot more romantic. But it is always best to baby step it, because आप अभी initially you are learning your chops. You're trying to make this a memory, a muscle memory of your own. Don't go too hard. You might creep her out. You might weird yourself out. You might get scared. Don't do that. Baby step your way through. But set up your personality by mentioning sex, by mentioning romance. In fact, one of the most interesting things I ever heard about hookup culture, sex, hooks, whatever, is Dan Bilzerian talking about how he gets so many women in whatever way he gets women. And I'm not using him as an ideal, but as an example. And he said कि पैसा और फेम से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा चीज़ जो actually लड़कियों को अट्रैक्ट करती है, दैट इज दैट आई ऑलरेडी हैव सो मेनी वुमेन अराउंड मी. एंड सब इसके आसपास की सारी मोरालिटी, इनफैक्ट रसल ब्रांड के आसपास की सारी मोरालिटी उठा के कचरे में फेंक दो. सिर्फ टेक्निक को टेक्निक के सेंस में देखो, सिर्फ एक चीज़ को, एक आइडिया को आइडिया के सेंस में देखो. व्हाट ही इज रियली सेइंग इज, क्योंकि बाकी औरतों को पता है कि मैं सेक्सुअली बहुत एक्टिव हूँ, रोमांटिकली बहुत एक्टिव हूँ, वो ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड आते हैं उससे. और ये एक अगर तुम शार्क टैंक इंडिया पे जा रहे हो, तुम्हें पता है अश्नीर ग्रोवर कैसा है, तुम्हें पता है पीयूष बंसल कैसा है, तुम्हारी एक एक्सपेक्टेशन सेट है ना उनके साथ कि वो ये मांगता है, वो ये बोलता है, वो ऐसा करता है, वो सेम चीज़ है. इट इज़ रफली द सेम थिंग. सो all in all, what you've got to manage to do is somehow communicate that you're a sexual being and you're interested in a romantic relationship early on. And not just in a 1:1 communication, but overall as a personality thing. Now, let's watch a few examples from Russell Brand. Because for me, all things must come from a centre of truth. Whether you're doing this interview here on the project, or doing stand-up comedy, or making love to a fine-looking woman in hope of a second child. See, he's talking about something so serious. Pure personality communication है. किसी से flirting नहीं कर रहा है directly. कोई उल्टी सीधी बात, कोई यहाँ पे किसी को attract करने की कोशिश नहीं कर रहा है. He's just talking about his shit, and suddenly he has an idea where he throws in something sexual. Now the people watching it, the reason why Russell Brand became a sex symbol, why there is a Shagger of the Year award in the UK named after Russell Brand, is exactly because of this, because his personality is oozing sexuality. That's it. He made something that was about something entirely different, something extremely serious about sex in a second and a half. That's all. That's all it takes to communicate that you're a sexual creature. It's a joke pointed at no one in particular that involves sex or romance. आगे देखते हैं. In you that is true, from the place that in you is real. From some ideologies you would call it God or Allah or Vishnu or whatever, but for me it's that essence behind your personal identity. We are connected to greatness. All of us feel it in silence, the quiet voice of wonder present in us all. You can use that in comedy, you can use it anywhere. Even great athletes use it. Use that. See how he got back to being serious immediately right after. Personality show करी कि मैं serious हूँ, as well as I'm sexual, and then he just went on talking about what he was talking about. You were knee deep in Hollywood a few years ago. You had, Not knee deep, Peter. See, मतलब अब because एक already existing frame of sexuality established है,
The guy is just asking him, bro, to Hollywood mein, you were like so involved, you were so knee deep. And he's like, not knee deep. And people already know that they have to laugh about the sexual joke hidden there. They don't think of it as anything else. They don't think ki koi mystery hai. It's a sexual joke. That's as clear as that. Like, so he has effectively set up his personality to be a sexually alive creature. Now, if he goes and talks to somebody and sort of helps them out, if sort of plays around with them, jokes around with them, the likelihood of that person to think that he's flirting is a lot more than then to think he sirf dosti bana raha hai. It's as simple as that. Watch. You don't stop it. You're in Hollywood and you stop at the knee. You've misread the instructions. You see my point? Go the full rest of the leg. Go the full rest of the length or whatever. Again, you have to understand that India is a very varied cultural context, right? Horizontally, we're very, very different people. In all parts, the cultural context changes rapidly. हम लोग homogeneous नहीं हैं, हम heterogeneous हैं. तो हो सकता है कुछ जगहों पे, I can imagine some places in Bombay and Delhi where cracking a joke, something similar to this might be all right. But I can also imagine places where you just cannot say something like this. And so for that, what you have to make sure is that your personality communicates that you're a person जो romance और sex के लिए available है. एक इनर्ट सिर्फ दोस्ती करने आया हूं वाली वाइब से कभी भी अपनी पर्सनैलिटी एक उस सेटिंग में कैरी मत करना जहां तुम किसी से फ्लर्ट करना चाहते हो यार, वरना उनको कभी अंदाजा ही नहीं लगेगा. दैट इज रूल नंबर 3. रूल नंबर 4 इज ह्यूमर. एंड ह्यूमर का एक स्पेसिफिक पर्पस है. ह्यूमर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेटिंग अप योर पर्सनैलिटी. लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फनी हो, उनके साथ खेलते हो, उनको लुभाते हो, उनको मनाते हो, उनके साथ एक लेवल ऑफ डायनामिक मोशन में इन्वॉल्व हो इंस्टेड ऑफ एक स्टिल हाँ तो फिर क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ. उसकी भी अपनी नीड है. उस लेवल पे रिलेशनशिप बिल्डिंग की भी अपनी नीड है. हाँ तो क्या हुआ, इस तरह की नॉर्मल बात करने की. बट अगर आप में एक तो ह्यूमर स्ट्रेट अप इज अ सिग्नल ऑफ विट, राइट. आप अगर इफ यू लुक अप द एवोल्यूशनरी लिटरेचर, बायोलॉजिकली स्पीकिंग, क्या बोलता था मैं, व्हाट वाज द वर्ड, ऑन अ बायोलॉजिकल लेवल ह्यूमर इज अ सिग्नल ऑफ विट. अगर आप ह्यूमर एम्प्लॉय कर पाते हो अपनी बात में, इसका मतलब यह है कि आप विटी हो, आपके पास क्विक थिंकिंग, वो कहते हैं ना बीइंग क्विक ऑन योर फीट वाली स्ट्रेंथ एक्सेसिबल है. ऑन अनदर लेवल द पर्पस ऑफ ह्यूमर इज टू अलाउ पीपल टू फील दैट दे कैन टेक हिज अदर स्टफ इन अ ह्यूमरस वे टू. कि जब आपसे कोई बात करे वो आपको सिंपैथेटिकली इंटरप्रेट करे. किसी भी इंसान को इंटरप्रेट करने के 2 स्ट्रेट तरीके हैं. एक जहाँ पे आप कॉन्फ्रंटेशनल हो, जहाँ पे आप ओपोजिंग हो, जहाँ पे आप चाहते नहीं हो वो यहाँ हो. आप जैसे ही किसी इंसान को उस तरीके से इंटरप्रेट करोगे आप सिर्फ खामियां उठाओगे. अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हो, अगर वो एफेबल हैं, अगर वो लाइकेबल हैं, इवन इफ वो लाइक्ड नहीं हैं अभी आपसे, वो लाइकेबल हैं, तो आप उनको अच्छे से इंटरप्रेट करते हो. आप उनकी गलतियां माफ़ करते हो, आप उनकी वल्नरेबिलिटीज़ माफ़ करते हो, आप उनकी क्वर्क्स को एज क्यूटनेस इंटरप्रेट करते हो. एंड ह्यूमर प्लेज अ बिग रोल इन दैट. एंड अगेन ह्यूमर, मसल मेमोरी, यू हैव टू कंटिन्यूसली एक्ट इट आउट टू गेट देयर. बट द पॉइंट इज ह्यूमर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेटिंग अप योर पर्सनैलिटी, बिकॉज वॉट ह्यूमर लेट्स यू डू इज allow people to understand that you do not have to take my stuff in a non-healthy way. It's all healthy fun and games. That's about it, right? So we'll look at a few examples where Russell uses this and try and understand how humor can be used to diffuse situations and at the same time signal to people that you can take the rest of my stuff in a healthy way as well. Come, let's watch. I don't like that bit. Although I like your one. In your parliament, they got swivel chairs. Like, that's amazing. No, you're out of order, mate. It's so sort of informal. A swivel chair. You would not get that in my parliament in England. Order, order. Like, it's more grown up. Your parliament, people are like, hey, fucking hell. Excuse my language. Sorry, Australia. See, he almost said something he was not supposed to say on TV. But इससे पहले इतना ह्यूमर था ऑलरेडी कि लोग अभी भी हंस रहे हैं. लोग आर नॉट लाइक अरे इसने क्या बोल दिया, कट करो शो को, ये वो. दे अंडरस्टैंड कि ये जोकिंग आदमी है, इसकी पर्सनैलिटी फनी है, इसके मुंह से निकल जाता है. उसकी खामियों को लोग कितना सिंपैथेटिकली, कितना हेल्दीली इंटरप्रेट कर रहे हैं. Circular, cyclical, circuitous arguments, and so I'm discovering something new and profound, and I'm just learning how to communicate it so as I don't embarrass anybody or anyone. Your fans are very dedicated. What's it? They better be! And so are the people in my coffee shops. They're unreliable! What do you mean you took too many drugs to bake a cake? Oh, I'm sorry, boss. The cake's full of drugs. Delicious. Put 10% on any drug-filled cake. Heroin's not cheap. What's wrong with these kids? Is there any backlash when you take a break? See, that's what I meant.
कि उसने इस लेवल पे ह्यूमर से लोगों को तैयार कर रखा था इस हेल्दी एक हैप्पी कॉन्वर्सेशन के लिए कि वो ड्रग्स के बारे में भी बात कर रहा है, उल्टा सीधा कुछ भी बक रहा है. पीपल आर वेरी हैप्पी टू टेक दैट, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू सेट अप योर पर्सनैलिटी फॉर ह्यूमर. सेटिंग अप योर पर्सनैलिटी फॉर रोमांस एंड सेक्स कम्युनिकेट्स इंटेंट, एंड we'll talk about how you establish intent further along. But setting up your personality for humor allows you to buy insurance against your own mistakes, against your own slips of mouth, slips of tongue, against your own embarrassments. And that is the brilliant part. So, up until now, let's go over the singular rules to get an understanding of whether we have what we want. The first step is do not be afraid of being seen. Second is take the lead. The third is set up your personality for romance and sexuality. The fourth is set up your personality for humor. Now you are kind of ready. Now we can begin taking this to a more interpersonal level. As far as ये प्यार और चेंज वाला आइडिया, इसको हम रूल नंबर 6 में डिस्कस करेंगे और ये सेम इंटरव्यू से हम देखेंगे रसल के बेहतरीन ब्यूटीफुल टेक्निक्स ऑन हाउ ही टेक्स हिमसेल्फ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल 7. यू कैन टेस्ट दैट हाइपोथेसिस विद ऑलमोस्ट एनी वुमन यू नो. और ये जो 7th रूल है ना, ये प्रेशर कुकर का ढक्कन है. यहाँ से हम पूरा जो स्ट्रक्चर अभी तक एस्टैब्लिश किया उसको टाइटन कर लेंगे. दैट इज हाउ ही कम्युनिकेट्स एब्सोल्यूट कंफर्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी. आप इसको 1:1 यूज कर सकते हो. इसमें कुछ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या पर्सनल करेज इस सब के बारे में इतना कुछ लेना देना नहीं है. प्रखर भाई ठीक है, मैंने सारी बात आपसे सुन ली, मैंने सारी बात आपसे समझ ली, मेरे को आइडिया लग गया आप क्या कह रहे हो, बट इसको करने में अगर मैं नहीं डिलीवर कर पाया तो क्या? वो सीक्रेट केमिकल एक्स जो मिसिंग है ना तुम्हारी डिलीवरी में, उसे कहते हैं. If you have a hard time putting your thoughts into words, if you think I do that well enough, well, अगर उस चीज की गारंटी है तभी go check out the art of conversation. I've created a proper structure for you to figure out how to communicate yourself properly. I think you'd like that.